In the previous class, we have discussed the mechanism of adsorption. Now, we will discuss the type of adsorption. Based on the nature of force acting, the adsorption is categorized into two types. The first one is known as physiosorption and the next is known as chemiosorption. In case of physical adsorption, the adsorbate molecules are attached with the adsorbent with the help of weak van der Waals forces. Whereas in case of chemical adsorption, the adsorbate molecules are attached with the adsorption by the means of chemical bond. This chemical bond may be ionic or covalent. Energy is required for the formation of bonds, chemical bond. Therefore, the chemical adsorption is also termed as activated adsorption. We have certain example. We can say the physioabsorption at lower temperature may be converted into chemioabsorption, chemical adsorption at higher temperature. We have example. In case of hydrogenation process, the dihydrogen molecule firstly attached to the nickel by the means of van der Waals forces, but later on they dissociate and they form hydrogen ion which is attached to the nickel by the means of covalent bond, or we can say chemical bond. So this is how we can know that at lower temperature the physioabsorption, and when temperature is provided to you, or we can say higher temperature is there, then that physioabsorption is converted into chemioabsorption. In certain cases, these two may occur simultaneously, and therefore it is quite difficult to separate physioadsorption and chemioabsorption. Let us discuss physioadsorption and chemioabsorption. Based on the nature of forces acting between the adsorbate molecule and adsorbent, the adsorption is categorized into chemical adsorption and physical adsorption. तो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल में ये हमारा क्या है? ये हमारा एडसॉर्बेंट है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? ये हमारे एडसॉर्बेंट हैं। अब ये एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल इस एडसॉर्बेंट से किस फोर्स से जुड़े हैं, उस फोर्स की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है या केमिकल एब्जॉर्प्शन है। पहला, इन केस ऑफ फिजिकल adsorption, the adsorbate molecule are held at the adsorbent surface by the means of van der Waals forces। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये जो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्बेंट से van der Waals फोर्सेस से जुड़े होंगे। दूसरा हम बात करेंगे
chemical adsorption. Chemical adsorption. In case of chemical adsorption, the adsorbent molecule are held by adsorbent by the means of chemical forces. Which may be ionic और कोवेलेंट. तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस से केमिकल फोर्सेस जुड़ा हुआ है. ये केमिकल फोर्सेस कैसे हो सकते हैं? वो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवेलेंट भी हो सकते हैं. द नेक्स्ट, sometimes at chemical adsorption as well as physical adsorption takes place simultaneously. Takes place simultaneously. Takes place simultaneously, and it is quite difficult to separate, or you can say it is quite difficult to determine chemical adsorption with physical adsorption. To the next. तो क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है और फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो एक साथ हो रहे होते हैं, और जब एक साथ हो रहे होते हैं तो उनको अलग अलग डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है. हमने डिस्कस किया कि कुछ फिजिकल एब्जॉर्प्शन हायर टेम्परेचर पर केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, और इसीलिए उसको एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन कहते भी हैं. फिजिकल एब्जॉर्प्शन at lower temperature may be converted into or will be converted into chemical adsorption. It is converted into chemical adsorption at higher temperature. Because they require higher temperature or activation energy. Therefore, it is known as activated adsorption. We will discuss by an example that physical adsorption at lower temperature may be converted into chemioadsorption. For example, if we have hydrogenation process, in case of hydrogenation process,
we know that nickel NiPd(Pt) is used as catalyst. Then in that process, the hydrogen, dihydrogen molecule is firstly attached with by the means of weak van der Waals forces. Firstly, this dihydrogen is attached with weak van der Waals forces. Then after, the bond between the hydrogen molecule is broken down and they are attached by the means of chemical forces. तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, फर्स्टली निकल कैटलिस्ट से वो वीक van der Waals फोर्सेस से जुड़ता है. बट आफ्टर दैट it is attached, this atom, this is hydrogen atom, it is attached with by the means of chemical forces. This is how we know that the physical adsorption at lower temperature may be converted into chemical adsorption at higher temperature. That's why it is known as activated adsorption. So the next we will discuss the characteristic of physical adsorption together with chemical adsorption one by one. When we are dealing with the characteristic of physical adsorption, then the first we know that it is not specific. The next, it will depends upon the nature of adsorbate. The next, it is reversible in nature. The next, it will increase with increase in the surface area. The next, the enthalpy of adsorption in case of physical adsorption is very less, that is about 20 to 40 kilojoule per mole. These are the characteristics of physical adsorption. The first which we are discussing, that lack of specificity. It means there is no preference for the surface to adsorb certain type of adsorbate, because the van der Waals forces are universal in nature. It means van der Waals forces can act in any two type of substances or molecules. तो स्पेसिफिक नहीं होता, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किसी दिए गए सरफेस के लिए किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ एडसॉर्बेंट की ही आवश्यकता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके बीच में बांधने वाला जो फोर्स है वो van der Waals फोर्स है, और van der Waals फोर्स यूनिवर्सल फोर्स होता है, और यूनिवर्सल फोर्स किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट कर सकता है, इसीलिए स्पेसिफिटी नहीं है. पहला क्या है हमारा? दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ physical adsorption. The first one, lack of specificity. It means on a given surface, on a given surface, it has not preference of for a particular type of adsorbate. क्यों? Because the van der Waals forces are universal in nature. The next, it will depend on the nature of adsorbate. What it means? एडसॉर्बेट में जो फिजियो एब्जॉर्प्शन है वो एडसॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करता है. क्यों?
क्योंकि एड्जॉर्बेंट जो है वो वेराइड काइंड्स का होता है। अगर हम गैसेस की बात कर लें तो ऐसे गैसेस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, यूं कह लेंगे कि वो इजिली लिक्विफेबल गैसेस हैं, सच एज अमोनिया हो सकती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकती है। तो ये इजिली लिक्विफेबल गैसेस हैं और इजिली लिक्विफेबल गैसेस का एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन अधिक होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। द टेम्परेचर above which liquefaction of a gas is not possible। तो इजिली लिक्विफेबल है ना वो, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, हाइयर होगा। टू द नेक्स्ट, if we have adsorption of gases, then that gas will absorb strongly, which has higher critical temperature। That is easily liquefiable gases। The next we have, this physical absorption is reversible in nature। Why? Because the force which held the adsorbent and the adsorbate is van der Waals, which is weakest forces, therefore it is reversible in nature। To the next, in this case the adsorbate molecules are held by weak van der Waals forces, therefore it is reversible in nature। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एड्जॉर्बेंट से वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़े होते हैं और वो वीक फोर्स है, इसलिए क्या होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। और रिवर्सिबल, अब उसको कैसे गवर्न करेंगे, तो वो गवर्न होगा ली चैट्रियल प्रिंसिपल से, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th। टू द नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगी तो जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। द नेक्स्ट वन, it will depend on the nature of surface area। It means the rate of physical adsorption increases with surface area। To the next, we know in case of physical adsorption, weaker force of attraction is created, van der Waals forces, therefore the enthalpy release in this process is very less in comparison to chemical adsorption, that is about 20 to 40 kilojoule per mole। It means in case of physical adsorption, the enthalpy release is very less, about
20 to 40 kilojoule per mole. This is the characteristic of physical adsorption.